Hello professionals, today's video is going to be very interesting as today we are going to discuss top 5 ways to generate side income. This video will be really helpful to those people who want to do something more along with their full-time job so that their monthly income can increase, or if you have taken a break from your career for any specific reason but at the same time you want your monthly income to continue without devoting long hours to work, then this video is certainly for you. So stay tuned till the end of the video if you want to know how to make more money by being in your comfort zone. So now let's get started. So number one option that tops the list, that is of freelancing. अगर आपको किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से अपने करियर से ब्रेक लेना पड़ा है, जैसे कि किसी फैमिली मेंबर के साथ कोई हेल्थ इशू है, or you had to take a break from your career because you have just become a mother and now you have to take care of your baby but not earning money is something which is pinching you every day, then freelancing is a good to go option for you. You can certainly choose to become a freelancer और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है. आपने जो भी एक्सपीरियंस अभी तक गेन किया है, जो भी स्किल्स आपने अभी तक एक्वायर करी हैं, उन्हीं के बेसिस पर आप फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं और उतना ही काम आप एक्सेप्ट कीजिए जितना आप अपने करंट शेड्यूल में कर सकते हैं. एज एन एग्जाम्पल, अगर आपको एचआर से रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस है तो आप एचआर से रिलेटेड फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं. अगर आपको टेक्निकल रोल का एक्सपोजर है तो आप उससे रिलेटेड फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं, या फिर आप डेटा एंट्री के काम की फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, या फिर कोई और स्किल जिसको लेकर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, आप फ्रीलांसिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं. And now let me show you different kind of work for which you can do the freelancing. So this is one of the freelancing websites, and as you can see there are more than 15 types of work and their subcategories which are listed here, and you can do these tasks by becoming a freelancer. And for this you just need to create your profile and upload your CV here. And here I'm sharing few websites where you can register yourself as a freelancer so that you start getting more and more work. Number 1, freelancer.com. Number 2, freelanceindia.com. Number 3, upwork.com. Number 4, truelancer.com. And number 5, 99designs.com. And this one is specifically for the designers where you will get the work to design book covers, logos, websites and many more related things. Second option that is available for you to generate your side income, that is of becoming a blogger. If you're really passionate about writing and have deep knowledge about any particular industry or field, then you can certainly choose to become a blogger. And few benefits of working as a blogger are: number 1, आप कहीं से भी ये काम कर सकते हैं. नंबर 2, आप कभी भी ये काम कर सकते हैं. तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको फर्स्ट हाफ में ही ये काम करना है या सेकंड हाफ में ही ये काम करना है. तो अगर किसी फैमिली मेम्बर की डिपेंडेंसी आपके ऊपर है और इफ़ यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बेबी, then you can easily adjust your work schedule according to another person so that you can maintain a healthy work-life balance. But please take care of these things before getting into this work. Number 1, choose a profitable niche. That means कि जो भी कैटेगरी आप चूज़ कर रहे हैं ब्लॉगिंग के लिए, मेक श्योर कि आप उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कर लें एडवांस में, एंड इट हैज़ टू बी अ प्रॉफिटेबल कैटेगरी. नंबर 2, स्केल योर कंटेंट. दैट मीन्स कि जो भी टॉपिक्स आप चूज़ कर रहे हैं ब्लॉगिंग के लिए, उनके बारे में अच्छे से एडवांस में रिसर्च कर लें, एंड दोज टॉपिक्स हैव टू बी ट्रेंडिंग टॉपिक्स so that your blog gets more and more reach, and be consistent with your blogs. Number 3, build your reputation so that people start seeing you as an expert in your industry. And number 4, promote and grow. Now when you have understood about 2 ways to earn more money, it's time to move towards the third option that is available for you to generate your side income. तीसरा जो एक बहुत ईजी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है आपकी साइड इनकम को जनरेट करने का, वो है कंसल्टेंट बनने का. एज अ कंसल्टेंट आप अपनी सर्विसेज, अपनी स्किल्स दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को ऑफर कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में पैसे भी अर्न कर सकते हैं. एज एन एग्जाम्पल, अगर आपको फिनेंस की बहुत अच्छी नॉलेज है तो आप फिनेंस के वर्क से रिलेटेड कंसल्टिंग कर सकते हैं, या फिर अगर आपको सेल्स का काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है तो आप बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को उनके सेल्स प्रोसेसेस को डिफाइन करने के लिए अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं. और इफ़ यू हैव गॉट अ रिच एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट, देन यू कैन सर्टेनली गाइड द फ्रेशर्स to enter into corporate world and how can they scale their career in corporate world.
and there you can offer your consultancy, or you can choose to become a marketing consultant. But the basic idea is you have to be expert in your industry or in your field so that you can offer your services as a consultant. एंड आज की डेट में ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहां पर आप एज अ कंसल्टेंट खुद को रजिस्टर कर सकते हैं और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हैं. एंड हियर आई एम शेयरिंग द लिंक ऑफ वन ऑफ सच वेबसाइट दैट इज इंडेक्स गुरु. यहाँ पर आप एज अ कंसल्टेंट खुद को रजिस्टर कर सकते हैं, अपने लिए प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं. Now let's talk about fourth option that is available for you to generate your side income. But before that, I want to ask a small question to you. Are you really finding this video informative, helpful? Am I adding something to your knowledge today? If yes, then like the video, share your thoughts in the comment section, and do subscribe to the channel to know more about job interview tips, career guidance, and latest HR trends. And here on this channel, you will find the answers of all your career related queries. So please click on the subscribe button right now. Coming back to fourth option जो आपके पास अवेलेबल है आपकी साइड इनकम को जनरेट करने का, वो है ऑनलाइन टीचिंग का. इफ यू आर रियली पैशनेटेड अबाउट टीचिंग, हैव अ गुड नॉलेज ऑफ एनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, a computer and an internet connection, then you can certainly choose to become a teacher where you can teach various students online. And here I'm sharing links of few educational portals where you can apply to become an online teacher. Number 1, Vedantu. Number 2, Learn and Pay. Number 3, TutorMe. Number 4, Tutor.com. And number 5, gurusiksha.com. और ये कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके लिंक मैंने आपके साथ शेयर किए हैं. इसके अलावा ढेरों वेबसाइट्स ऐसी हैं जो इंटरनेट पे अवेलेबल है जहाँ पर आप ऑनलाइन टीचर के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं. एंड फॉर दिस यू जस्ट हैव टू एक्सप्लोर द इंटरनेट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट फिफ्थ ऑप्शन दैट इज अवेलेबल फॉर यू, एंड दैट इज क्रिएट अ कोर्स एंड सेल. If you have deep knowledge of any particular field or industry, then another good option which is available for you to generate your side income, that is creating your own courses and selling them to educational websites like Udemy, Skillshare, Teachmore, Teachable, and there are many more such websites. And you can create courses on MS Excel, PowerPoint, digital marketing, banking, cooking, presentation skills, and the list goes on. So these are different ways that you can use to generate your side income. I hope it will help you. If you have any other question related to HR or to your career, then you can directly reach out to me on Instagram. Here are the details. Another important thing, I have designed this complete playlist of job interview, and watching this playlist will give you a clear idea how to crack any job interview and what points you should consider before choosing an employer for yourself.